Hello children, how are you all? Children, I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, other than watching the videos and completing the work, children, you should also read the chapters and learn difficult terms. So there are many terms which are difficult for you and which are new for you. So you should read the chapter and learn those spellings also. So children, here we are with our computer book, that is IT Planet, My Bits and Bytes, Computer Series 1. So children, I welcome you all once again to the computer class, class 1 computer children. In the previous video, we had done the book exercise or the worksheet given at the end of the book. So children, there are several worksheets which are given at the end of the book. So as we have completed chapter 3 and 4, the worksheet 2, that is unit test paper, was for chapters 3 and 4. So in chapter 3 and 4 children, we had studied about different the places where computers are used and the different uses of computers. So in chapter 3 children, we had studied about the different uses of computer, and in chapter 4 we had studied about the places where computers are found. So by now we have understood what is computer and what are different purposes of computer and what are the different parts of computer which are very important and how these parts work and what are the function of these parts. And then we also studied about the different uses of computer and the places where these computers are found. So children, based on chapter 3 and 4, here we have worksheet which we had done in our previous video. So let us revise this worksheet and we'll do some more questions from the chapter 3 and 4, and then we will come back to our next topic children, that is chapter 5, turning on and off a computer. So let us do this, revise this worksheet children. You can open page number 66 of your computer book. Page number 66 page children. This worksheet we had completed. We will go through the worksheet, we will revise the worksheet and move further into the book. So here children, first question was pick the correct answer. At railway station, computers help in booking tickets. As we know children, at railway station we use the computers for booking the tickets. So you will put a tick in front of ticket. Second one children, computers are can solve dash for you. So as we have studied different uses of computer, one of the uses solving the sums. So computer can solve sums for you. Here the computer can solve sums for you. Now you can listen to the songs from the speaker. If you want to listen to the song children, you have to use speaker. So speaker is also one of the part of computer, but it is required only when you need do such type of question, such type of task, or when you want to hear something from the computer. So you use speaker to hear something from the computer. So here you are listening to the music or you want to hear to the song, that is why you are using speaker. So first one is at railway station, computers help in booking tickets. Second one, computers can solve sums for you. Third one, you can listen to the songs from the speakers. Then second question is true and false children. In true and false children, worksheet, let us write here worksheet 2. Here is the worksheet 2. Now उसके बाद children, we have question number B. In question number B, as we have studied in our previous video, write T for true and F for false statements. So here some statements are given. We will read the statements and try to understand, know whether they are true or false. First one, a computer can show movies. Computer हमें movie दिखाता है. It can show movies. So you will write T for true. Computers can walk from one place to another. Computer एक जगह से दूसरी जगह walk कर सकता है. This statement is wrong. As we know children, computer cannot move from one place to another. So ये statement गलत है and you will write F for false. Computers are used for teaching. Yes, of course children, we are using computer for teaching, and from the beginning we are using the computers for teaching. So this statement is true. You will write T for true. So a computer can show movies, true. Computer can walk from one place to another, false. Computers are used for watching, for teaching is true. Now C.
See children, guess the areas where computers are used. As we have already studied about different uses of computer children, here we can say help doctors in diagnosing the disease. Computers help doctors in diagnosing the disease. Diagnose means to find out. हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है तो कंप्यूटर के हेल्प से डॉक्टर्स कैन डायग्नोज द डिजीज. सो हियर द कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग द डिजीज. नाउ हेल्प in typing letters. Of course children, in the offices we use computers for typing the letters. So here in first one you will write hospital, H is already written, you will write O, SP is written, you will write ITAL, hospital. उसके बाद help in typing letters, office, O लिखा हुआ है, FFICE, office. उसके बाद D, fill in the blanks. D में we have fill in the blanks. You can listen to dash on computer. क्या सुन सकते हैं? यहाँ पे word starts with M, तो आप लिखेंगे music. We can listen to the music on computer. Then you can play games on computer. Because the word is with games and play तो हम games ही करते हैं, तो you will write games. So children, guess the areas where computers are found. Help doctors इन डायग्नोसिंग द डिजीज के सामने हम H से वर्ड शुरू हो रहा है, H लिखा है, SP लिखा है, I भी लिखा है, तो H के बाद हम O लिखेंगे. SP इज ऑलरेडी रिटन, विल राइट ITA और L पहले से लिखा है तो हॉस्पिटल. दूसरा है हेल्प इन टाइपिंग लेटर्स, ऑफिस, लेटेस्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ O, FF हम लिखेंगे, I लिखा है, C लिखेंगे, ऑफिस. You can listen to music, MUSIC, music on computer. You can play games on computer. So these were the questions which are given in the book. So let us do another question from the chapter. So here children, there is another exercise which we are going to do here. Worksheet 3 हम करेंगे. Worksheet 3 में हमारे पास है first question जो हमारे पास है that is worksheet WORKSHEET 3. Here we have fill in the blanks. FILLBLANK. Fill in the blanks. BLANKS, blanks. So here children, words are given. We are going to use the words for filling up the blanks. So we are going to read out the sentences and write the suitable answer. And the answers are also given. So you will, here we have a box. You can see here we have a box. In the box we have some of the words given here. So we are going to pick the words from the box and write in the blanks to fill these blanks. Here we have first one, monitor, MONITOR, monitor. Here we have monitor. Then we have keyboard, KEYBOARD, keyboard. Then we have four, FOUR. Here we have four के बाद then we have pointer, POINTER, pointer. Then we have MOUSE, mouse. Next is CPU, and last word is keys, KEYS, keys. So children, now we are going to use these words to fill up the blanks given here. So children, let us write first one. First one we have a computer, COMPUTER, computer. A computer dash has two, TWO2, a computer dash has two buttons. A computer dash has two buttons. So children, if you talk about monitor, the computer monitor has two buttons is not the correct answer. Keyboard has two buttons is also not correct. 4 is also not correct. Pointer is also not correct. Mouse, a computer mouse has two buttons. As you have studied about the mouse in the chapter children, you know that mouse has two buttons. So here you will write
Here you will write mouse, M-O-U-S-E, mouse. As we know, mouse has 2 buttons. So computer mouse has 2 buttons. Here you will write computer mouse has 2 buttons. Now second one, children, in the second we have dash is the brain of a computer. Dash is a B-R-A-I-N, brain of the computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Dash is a brain of the computer. So children, as we know, monitor, no, monitor is not the brain of the computer. Keyboard, no, this is also not the correct answer. 4, pointer, no. Then CPU, as we know children, CPU is the brain of the computer. So you will write here CPU. Central Processing Unit is also known as the brain of the computer, as the CPU controls all the other parts of the computer, children. It is known as brain of the computer. Same as in our body is controlled by the brain. So children, as we know, in our body, brain controls all the other parts of the body. Similarly, in the computer, CPU is the part of computer which controls all the other parts of the computer. That is why it is known as brain of the computer. Now, thirdly children, a computer has dash main parts. A computer, third, a C-O-M-P-U-T-E-R, computer has dash M-A-I-N, main, P-A-R-T-S, parts. So children, as we have studied in the chapter, there are different parts in the computer, but there are some parts which are very important, and without these parts a computer cannot perform even a single task. So these parts are 4 main parts, that is CPU, monitor, keyboard and mouse. So all these join together and then the computer performs any task. So this complete set is called computer system. So computer works in a system. When all these 4 parts join, they perform any task. So here a computer has 4 main parts. Here you can see, first one you have written mouse, second one you have written CPU, and third is 4. So a computer has FOUR, 4 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. नाउ फोर्थ वन 4 में हमारे पास है डैश लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. डैश लुक्स लाइक अ LOOKS, looks, LIKES, looks, LIK, like, dash looks like a television, 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 dash look like a television. So here children, you can say dash look like a television. Let us see the options: monitor, keyboard, pointer, keys. So as we know children, the monitor look like a television screen. तो यहाँ पे हम टेलीविजन नहीं, स्क्रीन हम लिखेंगे टेलीविजन स्क्रीन. सो द आंसर इज मॉनिटर. MONITOR. So monitor looks like the monitor look like a monitor looks like a television screen. A monitor looks like a television screen. So here children, the answer is monitor. And fifth one children, fifth में हम लिखेंगे, fifth में हमारे पास है dash is used to move the mouse pointer. Dash is used to move, 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 MOUSE, mouse is used to move, TO2 MOVE, move, dash, mouse
dash. Dash. Mouse is used to move mouse dash. So here children, what is the answer? Monitor we have already done in fourth one. Left over is keyboard and pointer. A mouse is used to move the mouse, keyboard is wrong. So here answer is mouse pointer. So here आप लिखोगे, here you will write 5 and here you will write mouse pointer. P-O-I-N-T-E-R, pointer. Here you will write mouse pointer. Then उसके बाद हमारे पास है sixth one. In sixth children we have, sixth में हमारे पास है keyboard has buttons called. Keyboard K-E-Y, key, B-O-A-R-D. Keyboard has buttons, B-U-T-T-O-N-S, buttons, called, C-L-E-E-D, C-A-L-L-E-D, called dash. So children, here two words are left. One is keys and the keyboard. तो keyboard तो यहाँ आंसर नहीं आएगा, keys आएगा, क्योंकि the small buttons present on the small button present on the keyboard is called keys. So here you will write K-E-Y-S, keys. Keyboard has buttons called keys. So here you will write keys. अब seventh में लिखेंगे children, dash is a part of computer which is used for typing words. Dash is a part of computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer, used for typing, T-Y-P-I-N-G, typing. Dash is a part of computer used for typing. So children, the word left is keyboard. Yes, keyboard is the part of computer which is used for typing. So children, let us understand these once again. So first one children, as we know, a computer dash has two buttons. So as we have studied about mouse children, the mouse is one of the important part of a computer. As we all know, a mouse is one of the important part of the computer, and we have studied about mouse that there are two buttons on the mouse. One button is called left button, left mouse button, and right mouse button. So using these buttons we can do several functions, whatever we can do with the mouse. तो हम mouse का use करते हैं. Mouse को use करके we can draw or we can draw sketches, we can draw lines, we can draw anything we want to draw, we can draw. And this mouse, the computer mouse, has two buttons, and these two buttons are called left mouse button and right mouse button. So here we can write a computer mouse has two buttons. यहाँ पे हम mouse लिखेंगे. A computer dash has two buttons, a computer mouse has two buttons. Then second one children, dash is a brain of the computer. What is the brain of the computer? Brain means children something which controls the complete body. हमारी बॉडी, बिना ब्रेन के हमारी बॉडी को पता ही नहीं होगा कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो भी करेंगे हम गलत सलत करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम करेंगे, उल्टे पुल्टे काम करेंगे. तो यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. Whatever we do, whatever work we do using our different parts of the body children, it is controlled by the brain. So here, that is why the brain is controlling the complete body. So here in case of computer also, all the other parts of the computers are controlled by CPU. That is why CPU is also known as the brain of the computer. CPU को हम computer का brain कहते हैं. उसके बाद हमारे पास है a computer has dash main parts. So as we studied in chapter 2 that computer has different parts, and there are some parts which are very important. These are four main parts called keyboard, mouse, monitor and CPU. जो जितने भी हम पार्ट हैं सभी ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम सभी पार्ट को हर वक्त नहीं यूज़ करते हैं. तो देयर आर सम पार्ट्स, दीज आर फोर मेन पार्ट्स दैट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU.
इन सब के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। जब भी हम कोई काम कंप्यूटर से परफॉर्म करते हैं, ऑल these 4 parts should be attached to the computer. उसके अलावा there are many parts. For example, children, we can say microphone, we can say scanner, we have printer, we have webcam. तो ये सारी चीज़ों का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। गाना सुनना है तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक का हमें जब गेम खेलना होता है तो जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई भी आवाज़ सुननी है तो स्पीकर का, और कुछ बोलना है कंप्यूटर को, बोल करके इंस्ट्रक्शंस देना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। कुछ पिक्चर्स उसको प्रोवाइड करनी तो स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर के ही पार्ट है, लेकिन दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दीज 4 पार्ट्स। इन 4 पार्ट के बिना तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल कंप्लीट। दैट इज़ वाई अगर इनमें से एक भी पार्ट नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये 4 पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं, बाकी सब आर यूज्ड व्हेन दे आर नीडेड। तो यहाँ पे हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं जब हमें प्रिंटर की ज़रूरत होती है। तो वी कैन नॉट से दैट दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट अ प्रिंटर बट इट कैन नॉट वर्क विदाउट a monitor, CPU, mouse or keyboard. So these 4 parts are important and remaining parts are also used when they are required. Now, then children, a computer has 4 main parts. Then dash looks like a television. So the first thing about the monitor is that it is just like a television screen. दोनों एक दूसरे के जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है ये मॉनिटर की तरह ही दिखता है। तो वी कैन से मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन screen. Then mouse is used to move mouse pointer. As we know children, the mouse is the part of computer which is very important part, without which we cannot perform many tasks. Mouse is used for doing many things. mouse को use करके हम कोई भी चीज़ अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले है तो उसको हम मूव कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं। और माउस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, इट इज़ यूज्ड फॉर कलरिंग ऑल्सो एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑल्सो। एंड सो यूजिंग द माउस वी कैन डू मेनी थिंग्स, बट वन ऑफ द मेन यूज ऑफ द माउस इज used to move the mouse pointer. So mouse pointer, the pointer which is displayed, which is always blinking on the screen of the computer children, that pointer is controlled by the mouse and it helps us to perform many tasks on the screen. अगर हम स्क्रीन पे किसी चीज़ को शो करना चाह रहे हैं, वंस अगेन किसी चीज़ को मूव करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम माउस पॉइंटर को यूज़ करके ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये माउस इज यूज्ड टू मूव द माउस पॉइंटर। Then keyboard has buttons called keys. So children, we have already studied there are several buttons present on the keyboard. These buttons are small in size and these are used for doing one or the other task, and these buttons are called keys. हम इन buttons को keys कहते हैं। So there are several buttons present on the keyboard. These small buttons are called keys. उसके बाद children, dash is a part of computer used for typing. Dash is a part of computer used for typing. तो यहाँ पे keyboard is a part of computer which is used for typing. As we know children, keyboard पे we have numbers, we have alphabets, and alphabets are used for typing anything in the computer. जो भी text हमको लिखना है तो हम alphabet keys को use करके ही लिखते हैं. So here children, you will read and learn as well as you will write it somewhere. This exercise also, this I have given from the chapter, and with this children we have completed this worksheet. में एक ही question था, and now with this we have revised all the 4 chapters. Now we are going to start our next chapter. अब children next chapter शुरू करने से पहले, because we have studied all about the computer, जो भी हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में कि what is a computer, what is how it works and what all it does, क्या क्या वो करता है। उसके अलावा जो कंप्यूटर है उसके यूजेस क्या है और किस किस प्लेस में पाया जाता है, the different places where these are used. That also we have studied about different parts of computer also. So we know almost everything about the computer which we should know. Now next thing is children, doing work on the computer, means working on a computer. So children, if you want to do something on a computer, if you want to work on a computer, before working on a computer you should know how to start how to on and off a computer.
कंप्यूटर पे काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे और कैसे ऑफ करेंगे। तो चिल्ड्रन, इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5, in that chapter we are going to learn about turning on and off the computer। तो सब कुछ जानने के बाद आगे कंप्यूटर पे कोई भी काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को हम ऑन ऑफ कैसे करेंगे। तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप जैसा कि जानते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम यूज़ करते हैं तो विद द सिंगल क्लिक और विद द सिंगल स्विच ऑन और प्लगिंग इन और स्विचिंग ऑन वी कैन स्विच इट ऑन, हम उसे ऑन कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंप्यूटर चिल्ड्रन, वी स्विच ऑन द कंप्यूटर बाय फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो यहाँ पे फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, देन ओनली यू कैन स्टार्ट अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करे और बहुत ज़्यादा समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के वर्क करे, तो यू हैव टू ऑलवेज स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अ कंप्यूटर इन द स्टेप वाइज मेथड बाय फॉलोइंग स्टेप वाइज मेथड। तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स को, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं काम कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, तो इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। और सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इन सब को हम समझ करके फिर कंप्यूटर को ऑन करेंगे। तो चिल्ड्रन, चैप्टर 5 दैट इज टर्निंग ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर। चैप्टर 5 है TURNING, टर्निंग ऑन, ON और OFF, टर्निंग ऑन और ऑफ अ COMPUTER कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू टर्न ऑन और ऑफ अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को ऑफ ऑन कैसे करेंगे। तो चिल्ड्रन, एज वी नो बिफोर, क्योंकि अगला स्टेप इज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। As we have understood everything about the computer, now in the next step we will be learning how to work on a computer and what all tasks we can do on the computer। तो सारी सिंपल चीज़ें जैसे ड्राइंग करना, गेम खेलना, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ डेलिकेट मशीन। अगर हम थोड़ा सा भी उसे रफली यूज़ करेंगे तो इट मे गेट हार्म्ड और इट मे गेट डैमेज और इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। बार बार हमें फिर परेशान होना पड़ेगा, सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कुछ भी काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को हम किस तरह से ऑन ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, topics covered are steps to turn on the computer, steps to turn off the computer. So mainly in this chapter we are going to read about two topics. First is steps, STEP, steps to turn on a computer, and steps to, second point is steps to turn off a computer, OFF, off a COMPUTER computer। So here children, आप कंप्यूटर को ऑन कैसे करेंगे, ऑफ करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, सो लेट अस सी how to turn off a computer children. Simple way to turn on a computer. The first step you should know is to turn on or off a computer properly. In this children, if you want to switch on a computer, you will, first of all, as we know children, computer is an electronic machine. We will switch on the पावर पॉइंट। हम सबसे पहले पावर पॉइंट को ऑन करेंगे, हम प्लग इन करेंगे, पावर पॉइंट को ऑन करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज यू विल स्विच ऑन द यूपीएस। एज वी नो चिल्ड्रन, यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड, यू फॉर अनइंटरप्टेड, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई। सो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और यूपीएस को ऑन करेंगे क्योंकि अगर इनकेस लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, यूपीएस उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और आपके काम को कंटिन्यूसली चलने में हेल्प करेगा। सो सेकेंड स्टेप इज टू स्विच ऑन द यूपीएस। थर्ड स्टेप इज टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, सीपीयू को भी ऑन करना ज़रूरी है। उसके बाद उसमें भी एक स्विच ऑफ ऑन बटन होता है, हम उसे ऑन करेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन वी विल स्विच ऑन द
मॉनिटर। लास्ट स्टेप में हम मॉनिटर को ऑन करेंगे। अब जो मॉनिटर को ऑन करना है चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, मॉनिटर में भी ऑन ऑफ बटन होता है, हम उस बटन से उसको ऑन ऑफ करते हैं। इसका मतलब है वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर। मॉनिटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। अब हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए। लास्ट में जैसे हम मॉनिटर को ऑन करते हैं, वी गेट अ वेलकम विंडो, हमें एक वेलकम विंडो मिलता है विच वेलकम्स अस टू द विंडोज़। अब विंडोज़ में वेलकम करने के बाद वो हमसे पासवर्ड पूछता है, सो दैट दे आर कन्फर्म कि वेदर द कंप्यूटर इज़ यूज्ड बाय द राइट पर्सन और नॉट। तो वहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर तो इजीली आपको पता है, आप अपना पासवर्ड डालते हो, कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप स्कूल में काम करें तो यू आस्क द पासवर्ड फ्रॉम द टीचर, और जैसे हम पासवर्ड डालते हैं वी गेट अनदर स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड वेलकम, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप विंडो। अब डेस्कटॉप विंडो से हम अपना काम कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। वी विल बी डूइंग दिस इन द ऑनलाइन क्लासेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो चिल्ड्रन, go through the chapter, revise the worksheet which we had done in our previous video, and we have done one question today also, that also you will read and learn. We will meet once again in our next class, children. Till then, thank you and have a nice day ahead.